Hello everyone, welcome to the Anonymous Guide. Last day I had given you this question as homework. So let's solve it, okay? I hope that you have done it. Let's try it. So as we had done this question number 7. So we will do this question also in the same fashion, okay? So we will write the power sets of individual set A and B and C. हम सेट A, B और C का पावर सेट लिख लेंगे पहले. तो पावर सेट ऑफ A क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 5. देखते हैं तो होगा शायद 4 है तो 2 to the power 4 मतलब 16 होगा. ठीक है, तो देखते हैं. There will be 16 subsets of set A. Let's see the answer. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okay, done. Then P of B. What will be P of B? 1 2 3, so 8. 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 and 5 हो गया 8. नेक्स्ट C 2 4 2 स्क्वायर मतलब 4 होंगे. 1 2 4. तो हम सभी के पावर सेट्स लिख लिए हैं. अब क्वेश्चन है X is a subset of B and X is not a subset of C. Means the X has to be a subset of B and not a subset of C. Not a subset of C. तो B का होना चाहिए, C का नहीं होना चाहिए. तो देखते हैं. तो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 तो वहाँ पर है ही नहीं. ठीक है, लेना भी नहीं है. 2 4 वहाँ पर नहीं है, 5 को नहीं लेना है. ठीक है. सो फिर X क्या निकला यहाँ पर? 1 होगा. ये तो वैसे ही नहीं है ना, डू नॉट बिलोंग टू C. ओके, सो C का सबसेट नहीं होगा. तो सिर्फ जो B का है और जो क्रॉस हो गया उसको हम छोड़ देंगे. बाकी जो B का बचा है वो उनको हम लेंगे. सो 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3. सो ये हो गया X का सेट. दिस इज द सेट ऑफ X. क्लियर, इजी. नेक्स्ट part 1 complete. Part 2, X belong to B. X is not equals to B means X is a subset of B. X is not equal to B and X do not belong to C. Okay. इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बस चेंज कर दिया है, बाकी तो सेम ही है. X is a subset of B. X is not equal to B and X is not a subset of C. मतलब क्या होगा कि ये देखिए, अगर X में ये आ जाता है, ये 1 2 3 अगर आ जाता है, ये 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? X will be equal to B. मतलब हम इस एलिमेंट को नहीं ले सकते, बाकी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा. X B के इक्वल नहीं होना चाहिए. X cannot be equal to B. So we have to eliminate this one from X. Rest is okay, no problem. If I take X as 2, 3, okay, it is not equal to
b, it is not equal to b, right? So what will be set x? 1 3 1 comma 2 1 comma 3 2 comma 3, that's it. Okay, this is set x. Next is third one. X is a subset of a, x is a subset of b, and x is a subset of c. X is a subset of a, x is a subset of b, and x is a subset of c. तो हमको तीनों का लगभग कॉमन देखना पड़ेगा. मतलब x जो है वो बिलोंग करना चाहिए p ऑफ a को, x बिलोंग करना चाहिए p ऑफ b को, और x बिलोंग करना चाहिए p ऑफ c को. तीनों को ही x बिलोंग करना चाहिए. तो x मतलब कॉमन देखना पड़ेगा. सो देखते हैं कॉमन क्या आता है. तीनों का कॉमन. इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो नहीं होगा. 2 is there, 2 is here, 2 is here. Okay, then 2. We got one element for x. That is 2. Next, let us see. 5, 5, 5. So 5 होगा. और कुछ 3 इसमें नहीं है. 1 2 1 2 इसमें नहीं होगा. 1 के सभी तीनों में कॉमन नहीं हो सकते क्योंकि सी में 1 है ही नहीं. 3 भी तीनों में नहीं है. 2 दो तीनों में है, 2 हो गया. यहाँ पर कॉमन देख लीजिए. 2 2 2 ऐसे भी कर सकते हैं. 2 2 2 कॉमन है तो ये तो होगा ही. एक तो 2 होगा, एक हम 2 को नहीं लेंगे. 5 तो होगा ही होगा. 1 तीनों में नहीं है, नहीं होगा. 3 तीनों में नहीं है, नहीं होगा. 4 तीनों में नहीं है, नहीं होगा. तो मतलब यही आंसर है. सो दिस इज द सेट एक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9. Prove that A is a subset of 5. Implies that A is equal to 5. Prove that A is a subset of 5 implies that A is equal to 5. Very, very easy question, right? We know that when two sets A and B are equal, then A is a subset of B and B is a subset of A. If we can prove this, then we can prove that A is equal to B. अगर हम ये प्रूव कर सके कि A is a subset of B and B is a subset of A, तो हम ऑटोमेटिकली प्रूव कर देंगे कि A is equal to B होगा. A के सभी एलिमेंट्स B में है और B के सभी एलिमेंट्स A में है, तो ऑब्वियसली A इक्वल टू B है ना. सो यहां पर देखिए, A is a set, therefore phi is a subset of A, as phi is subset of every set. phi क्या होता है? सभी सेट का सबसेट होता है ना. तो A का भी होगा. A तो एक सेट है तो उसका भी सबसेट phi होगा. मतलब phi is a subset of A. Therefore phi is a subset of A and A is a subset of phi. This is given. So therefore A is equal to 5. A क्या है? void set है. A is equal to 5. आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ये क्वेश्चंस इजी है, थोड़ा सा देख लीजिए. इजी है. और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा या
मैं सभी कमेंट पढ़ लूंगा, ठीक है, मैं सभी कमेंट का आंसर भी दे दूंगा, और अगर लगा कि बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहा है तो मैं वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, इसके आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी तो मैं उसको अगले क्लास में फिर से मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. Okay, so देखते हैं, if x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B. Second part, if A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. Third part, if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Fourth, if A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C. 5, if X belongs to A and A is not a subset of B, then X belongs to B. If A is a subset of B and X do not belong to B, then X do not belong to A. These are conceptual questions. What happens is that in school or in tuitions, coachings, this chapter is not much given the right amount of importance also. Okay, so sometimes this question comes in exams and many can't do. These questions are actually easy, but the wordings are such that if you do not practice it 1 or 2 times, you might find a little bit difficult doing it the first time and in the exam hall. Okay. So these are basic questions, questions based on addition only, from addition only. So yes, if one follows Adishama thoroughly, does all the questions, definitely they will succeed in board level exams, school level exams. But you have to practice, okay? And if you can't understand these questions, then for them this video is there, where I will explain each and every question, not only from Adishama but from many other sources, and then we will move on to the joint level questions also. Okay, as I have told in the introductory video that what is the procedure that I will follow. Okay, first we'll start with board level questions, easy questions, then slowly we will level up. Okay, we will upgrade our level. Okay, try this one. Okay, I hope that you have tried. Let's start. Okay, let's start. Okay, यहाँ पर एक चीज है ये और ये. What is the difference between these things? A belongs to B and X belongs to B. What is the difference between these things? We have to understand this first. See here. When it is said that A belongs to B, that means the full set A is an element of B. The full set is an element of B. And when it is said that X belongs to B, it means that X is an element of B. Okay, let's take an example.
For example, a 1 comma 2, a set contains this two elements 1 and 2, and a belongs to b. So b set will carry the set a, means this. So 1 comma 2 and any other set, let's say 3 4 5 6 7 8. And okay, so this 1 comma 2 as a whole is there in b. ये पूरा का पूरा ऐसे ले होगा. b में 1 नहीं है. 1 do not belong to b, 2 do not belong to b, 1 2 ये as a set belongs to b. This as a set belongs to b, but 1 just as an element do not belong to b, 2 as an element do not belong to b. Okay, so यही है इस क्वेश्चन का trick. In this question it is told that x belongs to a belongs to b. Let's take the same example. A is equal to 1 comma 2 and b is equals to 1 comma 2 as a belongs to b का है question में, and the question it is said that a belongs to b, so that's why 3 4 5 6 7 8. Okay, now in the question it is given, it is told that x belongs to a. So taking any element from a, 1 belongs to a and a belongs to b. Yes, set as a set it belongs to b. So a belongs to b, 1 comma 2 belongs to b. Yes, then x belongs to b, then 1 belongs to b. Is it true? No, this is false. 1 do not belong to b. Okay, again I am telling you that this 1 comma 2 is different from as an element 1 comma 2. Okay, this is the full set that is in b. As a set it is in b, and this is the meaning of a set belonging to another set. I hope that it is clear. Now in the next question, a is a subset of b, b belongs to c and a belongs to c. फिर से b belong to c और a belonging to c है. कोई एग्जांपल लेके देखते हैं. ऐसे ही तो नहीं लिख सकते ना, ट्रू और फॉल्स. एग्जांपल लेके देखते हैं. अब लिखा है यहाँ पर a is a subset of b and b is a subset of c. a is a subset of b, b belongs to c and a belongs to c. मतलब a सबसे छोटा होगा. So एक एलिमेंट का मान लेते हैं और b. अब a is a subset of b है तो b को मान लेते हैं ये. और c अब क्या दिया है, b belongs to c, b belongs to c. So c में क्या होगा, फिर b तो होना ही चाहिए, एज अ सेट होगा. और अपना कुछ ले लेते हैं 3. अब कहा है कि then a belongs to c. क्या a belongs to c है? Is a belonging to c? Here you see a is a subset of b. Yes, we have done this. b belongs to c. Yes, we have done this also. But a do not belong to c. This is false, as a do not belong to c. Why? A belonging to c would mean that this element should be in c. This element should belong to c. But is there any element 2? No. Okay, so a do not belong to c. A do not belong to c. Okay, next, third, a is a subset of b and b is a subset of c. Then a is a subset of c. A is a subset of b, b is a subset of c, then a is a subset of c. देखते हैं एक बार, यहां पर सबसेट लिखा है. ठीक है, लेट x belongs to a. अगर x a का एलिमेंट है और a b का सबसेट है तो x b को भी बिलोंग करना चाहिए. If x is an element of a and a is a subset of b, then x must belong to b. As a is a subset of b,
Therefore, X must belong to B. X must belong to B. ठीक है? And B क्या है? B C का सबसेट है. B is the subset of C. Therefore, all the elements of B must belong to C. So here we know that X belongs to B. So X belongs to B. It implies that X belongs to C. So an element that belongs to A, which is a subset of B, means that element also belongs to C. That means when A is a subset of B and B is a subset of C, it implies that A is a subset of C. Okay? So if A is a subset of B, B is a subset of C, then A is a subset of C. So this statement turns out to be true. Fourth part. If A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C. If A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C. Again, let's take some examples. A 1 2. Now B is not a subset of C, so B 2 3 4 5, and B is not a subset. A is not a subset of B. You can see 1 is extra, and B should not be a subset of C. Let's take C as 1 2 5. Okay. See here, A is not a subset of B. Yes, true. B is not a subset of C according to our example. Okay. Yes, it is also true. But see, A and C, A turns out to be a subset of C. A turns out to be the subset of C. यहाँ पर देखिए हमने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग A is not a subset of B and B is not a subset of C. But फिर भी A क्या निकल के आ रहा है? A subset of C. A फिर भी निकल के क्या आ रहा है? A subset of C. Therefore, this statement is false. Fifth, X belongs to A and A is not a subset of B, then X belongs to B. देखते हैं इसका क्या होता है. Let's see. A is equals to 1, 2. एक एग्जांपल ले लेते हैं. A 1, 2. B. अब देखिए A is not a subset of B, मतलब 1 या 2 कुछ भी छोड़ के बाकी हम ले सकते हैं. मान लीजिए ये है B का सेट. अब यहां पर देखिए X belongs to A. हम एक एलिमेंट ले लेते हैं. मान लीजिए 2 belongs to A. हाँ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड A is not a subset of B. ये भी हो रहा है जो हमने एग्जांपल लिया. According to the example, A is not a subset of B and 2 is an element of A. But 2 do not belongs to B. 2 do not belong to B, right? So therefore, X belonging to A and A not being a subset of B, it implies that X need not belong to B. X B को belong करेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है ना. X belong करेगा, कर भी सकते हैं. हम यहाँ पर 1 ले देते तो करता, लेकिन हमने 2 लिया जो कि नहीं कर रहा है. ठीक है. तो X बिलोंग करेगा कि 1 को, इसकी कोई गारंटी नहीं है. कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. तो ये हमेशा करेगा. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट. लास्ट 6th. If A is a subset of B and X do not belong to B, then X do not belong to A. Then X do not belong to A. If A is a subset of B and X belongs to B, then then X do not belong to A. X do not belong to A.
करके देखते हैं। ए बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। This means it implies that X, an element belonging to A, will mean that X belongs to B. That means an element which do not belong to A will mean an element which do not belong to B, which do not belong to B will mean it will not belong to A definitely, as B is the superset. See here, an element belonging to A will definitely belong to B, definitely. Now an element belonging to B might not belong to A, might not belong to A, definitely. Okay, see here, let's say this is A and B is this. So A is a subset of B. Okay, now all the elements of A belongs to B. This has to be there. This is the definition of subset. But all the elements of B might not belong to A. Like 3 do not belong to A, 4 do not belong to A. Okay, because B is the superset, so it will have some more elements. Okay. But here it is asking that A is a subset of B and X do not belong to B. Means X do not belong to B. Let's say 5 which do not belong to B. Can it belong to A? No, it can never be. राइट, ये हो ही नहीं सकता कि एक एलिमेंट जो कि ए का सुपरसेट है और उसमें अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो ए में हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट इंप्लाइज दैट एक्स और डू नॉट बिलोंग टू ए, मींस 5 डू नॉट बिलोंग टू ए। ओके, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सिक्स्थ वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि अगर ए सबसेट है बी का और बी में कोई एलिमेंट नहीं है, एक्स एक एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है, तो वो ए में हो ही नहीं सकता, ठीक है। Next question. The set of all x such that x belongs to real number and x lies between -4 to 6. X belongs to real number and x belongs to -12 to -10. The set of all x such that x belongs to real number and x lies between 0 to 7. The set of all x such that x belongs to real number and x lies between 3 and 4. Okay, so write the following subsets of R as intervals. ये तो लिख दिया। Find the lengths of each interval also. Find the lengths of each interval also. This is the question. देखिए एक चीज यहां पर है, मान लीजिए 3 और 4, 3 ओपन है और ये क्लोज्ड है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जो ओपन है, जो ये इसका क्या है, ये एक्सक्लूडेड है। ओपन मीन्स 3 इज नॉट इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड है। दिस इज एक्सक्लूडेड and 4 is included. This is the meaning of this. So how to represent it? So the part which is excluded is written in first bracket, okay, that is 3, and the part which is included
is written in square brackets. Infinity can never be included. So infinity is always written in the first brackets. Okay, 2 3 is it. Means 3 is included. Okay, now see, x greater than equals to -5 and x less than equals to 6 and x belongs to real number. It means that x, how to write this? See here, it is greater than equal to and less than equal to, means equal to means both 5 and 6 are included. So -5 and 6 both are included. Okay, but if here -5, यहाँ पर -5 जो है वो इंक्लूड नहीं है. Here -5 is not included. यहाँ पर दोनों ही इंक्लूडेड थे. यहाँ पर -5 इंक्लूड नहीं है. ठीक है, तो -5 6 इंक्लूडेड है, इक्वल टू है. जहां पर इक्वल टू होगा वो इंक्लूडेड हो जाएगा. जहां पर इक्वल टू नहीं है वो एक्सक्लूडेड है, ओपन है. मतलब -5 में ये है और 6 वाला क्लोज्ड है. दोनों ही ओपन हो सकते हैं. मान लीजिए ऐसा हो गया, ये क्या है, दोनों ही क्लोज्ड है. ये क्या है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड. ये क्या है, दोनों ही तरफ ही ओपन है, मतलब -5 6. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं. राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R एज इंटरवल्स. सो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर -4 में इक्वल टू नहीं है, तो -4 6 स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा, 6 पे इंक्लूडेड है, इक्वल टू है यहाँ पर. और इसका लेंथ क्या होगा फिर, देखिए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर -4 है, तो लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होगा, 6 + 4 तो 10. सो इसका लेंथ हो जाएगा 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, दोनों तरफ कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, तो x -12 नथिंग इज इंक्लूडेड. सो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर होगा. लेंथ क्या होगा इसका, 2. लेंथ 2 होगा. देखिए ये है -10 और यहाँ पर होगा -12, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 का. यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है. 0 इंक्लूडेड, 7 एक्सक्लूडेड. ये हो गया. लेंथ क्या होगा, 0 7, बीच में कितना गैप है, 7. सो लेंथ हो जाएगा 7. लास्ट क्वेश्चन, दोनों इंक्लूडेड है, तो क्या होगा, 3 4. लेंथ क्या हो जाएगा, 4 - 3 1. ओके, ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Write the following intervals in the set builder form. So -7, 0 क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है. सिंपल है, बहुत सिंपल है. द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to real number and -7 से बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा. x will be greater than -7 and less than 0 and both are excluded. That means equal to sign will not be given. equal to sign यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि दोनों -7 और 0 दोनों ही excluded है. 6 और 12 क्या होगा, the set of all x such that x belongs to real number and यहाँ पर देखिए दोनों ही included है, तो 6 greater than x is greater than equals to 6 and less than equals to 12. सिंपल है. 6 और 12, अब ये हो गया. इसका आंसर क्या होगा, the set of all x such that x belongs to real number and 6 एक्सक्लूडेड है तो इक्वल टू नहीं होगा, 12 इंक्लूडेड है तो इक्वल टू हो जाएगा.
-20 to 3 क्या होगा इसका? The set of all x such that x belongs to real number and x जो है तो ये 20 इंक्लूडेड है, 20 इज इंक्लूडेड, इक्वल टू -20 to 3. Okay, easy. Next question, question 13. A is equals to 1, 2, 3, 4, 5. Which of the following statements are incorrect and why? ट्राई कीजिए, मतलब पहले स्टेटमेंट्स देख लीजिए फिर ट्राई कीजिए. 3, 4 is a subset of A. Part 2, 3, 4 belongs to A. Part 3, 4 is a subset of A. Part 4, 1 belongs to A. Part 5, 1 is a subset of A. Part 6, 1, 2, 5 is a subset of A. Part 7, 1, 2, 5 belongs to A. Part 8, 1, 2, 3 is a subset of A. Part 9, 5 belongs to A. Part 10, 5 is a subset of A. Part 11, 5 under curly brackets is a subset of A. Very good question for your conceptual understanding. Very good question for your conceptual understanding. If your concept is good, then only you can solve this type of questions, or else you will be confused. Okay, very chances are there that you will be confused. Try this. Always remember one thing, that is subsets, like say A is 1, 2, 3, 4, not this question, but subsets are sets themselves. Subsets are sets themselves. So if I write the subsets of A, then it will be 1, 2, 3, like this way. 1, 2, 1, 3, like this way. Means they have to be written in curly brackets. This you should remember. Okay. Now the first question. 3, 4 is a subset of A. See here. The set A given has these elements. See, this you should consider as one element, one single element. This you should consider as one single element. Okay. So, see, A will have subsets like this. And so on. So, see, 3, 4 is not a subset if it is written in single curly brackets. It is just an element. So 3, 4 written like this is belongs to A, but 3, 4 is not a subset of A. But 3, 4, this one written in double curly brackets is becomes a subset of A. This thing has to be very clear. ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है. ठीक है, ये एक एलिमेंट है. तो अगर आपको ऐसा दिया गया कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट है. लेकिन अगर ये दिया आपको 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि 3, 4 तो एक एलिमेंट है. आपने तो लिखा ही नहीं इसको सबसेट के टाइप में. सबसेट में कैसे लिखना होता है? इस फॉर्मेट में. जो एलिमेंट है उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है. एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है, तो वो जाके सबसेट बनता है. तो यहां पर
3,4 जो एलिमेंट है उसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये हो गया सबसेट। ठीक है, फिर देखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये सबसेट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। थर्ड वाला क्या है, करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है। अब देखिए यहां पर फिर से किया है वही, वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए करेक्ट है। अब देखिए वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे नहीं लिख सकते वन को सबसेट में, सबसेट में सेट के अकॉर्डिंग लिखना होगा, ये एक सबसेट है, ये नहीं है, सो ये इनकरेक्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 125, 125 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये सही है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है। सेवन का क्या होगा, अब देखिए ये एलिमेंट वाइज ये बिलोंग करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 125, अब बिलोंग जब करते हैं तब हम ऐसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू ए। अब ये जब हम लिख दिए 125, इफ वी राइट लाइक दिस इट मींस इट इज अ सबसेट ऑफ ए, ओके, सो दिस बिकम्स इनकरेक्ट। नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स में, और इसमें क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आता है। अब नेक्स्ट 1 2 3, क्या 3 एक एलिमेंट है ए में, नहीं है, 3 एलिमेंट नहीं है, ये एक अलग ही एलिमेंट है, इसके अंदर वाला नहीं देखना है, ये टोटली एक एलिमेंट है, सो इनकरेक्ट। अब 5 वाला देख लीजिए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, ये तो हम सभी को पता है कि 5 एक सबसेट है ए का, तो यस इट इज अ सबसेट, सो दिस इज करेक्ट। क्या 5 बिलोंग करता है ए को, नहीं करता है ना, 5 बिलोंग नहीं करता, अगर 5 बिलोंग करता तो ये करेक्ट हो जाता, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, लेकिन 5 यहाँ पर दिया है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है 5 ऐसा करके, नहीं है ना, ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 5 एलिमेंट नहीं है, 5 एक सिचुएशन है सबसेट के अंदर जहां पर हम किसी भी एलिमेंट को चूज नहीं करते, लेकिन 5 एज एन एलिमेंट बिलोंग नहीं करता ए को, 5 डू नॉट बिलोंग टू ए, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर ये ऐसा रहता 1 2 3 4 5 और ऐसे 5, ये मान लीजिए ए का, अब यहां पर क्या हो गया, 5 एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया ए के अंदर, 5 एक एलिमेंट हो गया ए के अंदर। यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो 5 है वो बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है, और ये एक सबसेट है ए का, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये दिया नहीं है, तो फिर ये दोनों ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ओके, जैसे कि कल हम लोगों ने कल के वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, जैसे कि ए इज द वॉइड सेट 5, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए के अंदर एक ही एलिमेंट हो जाएगा 5। अब देखिए, मान लीजिए इसको हम एक सेट मान लेते हैं बी, तो बी के अंदर ये है, बी एक सेट है 5, यहां पर क्या हो गया, 5 एक एलिमेंट हो गया बी का, 5 बिकम एन एलिमेंट, और 5 बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ बी, 5 एक एलिमेंट हो गया बी का। सो अब पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, मतलब पावर सेट ऑफ पी ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, एक तो होगा कि 5, और क्या होगा, और कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है,
तो इसका कितना सेट हो गया, 2 सेट, 2 to the power 1, तो 2 सेट हो गया। और फिर पूछा कि इसका भी पावर सेट निकालना है, तो मान लीजिए इस सेट को हम सी मान लेते हैं, तो पावर सेट ऑफ सी क्या होगा। अब ये दोनों अलग से एलिमेंट्स बन गए, ये दोनों अलग से एलिमेंट बन गए, तो इसका क्या होगा, ये ले लिया, ये हो गया एक बार, ये हो गया एक बार। अब इन दोनों को लेना है और कुछ नहीं लेना है, तो वो 5, तो इसलिए 4 हो रहा है। ओके, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिए। हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे आज इस पर, इसके बाद आप घर में थोड़ा ट्राई कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही इजी है समझना, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस 1 or 2 टाइम्स, द थिंग्स आर वेरी इजी। Just practice 1 or 2 times. Okay, today we will do 1 or 2 more questions and then this part will be done. Next question, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। let B be a subset let B be a subset of A and let P A to B is equal to set X which belongs to P of A. Okay, X is an element which belongs to the power set of A, and X is a superset of B, and X is a superset of B. This is given. Show that power set of A to 5 is equals to P of A. Part 2, if A is equal to A, B, C, D and B is equals to A, B, list all the members of the set P A to B. Okay, this is the question. Try it once. Okay, let's try it. Here it's given that X belongs to P of A and X is a superset of B, or B is a subset of X. Okay, and P A to 5 means we have to prove that P A to 5 is equals to P of A. Let's check it. Let's check using this example. Let's consider A and B as this. Okay, so A is this. So what will be P of A? A B C इंडिविजुअल, पहले एक एक करके हम लोग लेंगे, उसके बाद दो दो करके, फिर तीन तीन करके, और फिर 4 और फिर 5 हो गया। सो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और फिर सी डी, फिर तीन तीन करके ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी, फिर 4 ए बी सी डी, फिर 5। तो ये हो गया। कुछ छूटा है क्या? ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया, सी डी हो गया, ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी। सही है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुछ छूटा है शायद। हाँ, मिल गया। ए बी डी छूट गया था ना, ए बी डी
और उसके बाद 5। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। ओके, 16 एलिमेंट्स 2 to the power। Okay, now what should we do? See here, let's write this part। Okay, इस पार्ट को एक बार देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन दिया है, ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये क्या होगा, तो इसके हिसाब से लिख के देखते हैं। Let's write using this definition given in the question. So P A to phi जो डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से, as per the given definition, X is a set which belongs to P of A. X is an element, and every element of power set is itself a set because it's a set of the subsets. So X belongs to P of A. Okay, fine. And X is a superset of phi. Now you take any element here, any element of this. These are themselves a set, right? These are themselves a set. So therefore, ये सभी जो पावर सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सब खुद में ही एक सेट है, वो सब खुद में ही एक सेट है ना। और फाई जो होगा, फाई हर एलिमेंट का सेट होता है, हर सबसेट होता है। फाई हर एलिमेंट का सबसेट होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? फाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, फाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। कितना इजी क्वेश्चन है। फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई एक्स का भी सबसेट होगा। आप किसी भी को पकड़ लीजिए, मान लीजिए एक्स है, वो सी और डी है, तो इसका सबसेट क्या क्या होगा? सी डी सी डी और फाई। एक्स एक एलिमेंट है ए का, और यहाँ पर जो सभी एलिमेंट्स है पी ऑफ ए के, एक्स एक एलिमेंट है पी ऑफ ए का, मतलब पावर सेट ऑफ ए का। और यहाँ पर जो जितने भी एलिमेंट्स है होंगे एक्स पी ऑफ ए में, जितने भी एक्स होंगे वो सभी खुद में ही एक सेट होगा। ऑल द एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए आर themselves a set, and if we write the subsets of these, then we will definitely get phi, because phi is the subset of every set. So therefore this holds true, this holds true. So this is a true statement. No problem regarding, right? Phi is a subset of every set. I hope that part 1 is clear. Now part 2. If A is this, B is this, list all the members of the set P A to B. Now P A to B, it means that X, an element of P of A, and X is a superset of B. X is a superset of B. Okay, this is the question. So what is B here? What is B here? B in question number part 2 is A and B. B is A and B. So B set B is A and B. So what will be the power set of B? B का power set क्या होगा? A B A B and phi। हालांकि इसकी पावर सेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बी का सुपरसेट होना चाहिए, बी का सुपरसेट होना चाहिए, मतलब जो भी सेट होगा एक्स यहाँ पर, उसमें ये दोनों एलिमेंट तो होने ही चाहिए। एक्स जो कि पी ऑफ ए से बिलोंग करता है, हम वो ही एक्स लेंगे जिसमें ये दोनों हो ही, जिसमें ये दोनों बिलोंग करते ही हो। तो देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें सिर्फ ए है, नहीं ले सकते, सिर्फ बी नहीं ले सकते, सिर्फ सी नहीं ले सकते, सिर्फ डी नहीं ले सकते, ए बी, ये तो हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है, ए डी नहीं हो सकता, बी सी नहीं हो सकता, ए नहीं है, बी डी नहीं हो सकता, ए नहीं है, सी डी नहीं हो सकता, ए नहीं है, ए बी सी हो सकता है, ए सी डी डी नहीं है, नहीं होगा, बी सी डी नहीं होगा, ए नहीं है, ए बी सी डी हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, फाई होगा, फाई नहीं हो सकता, सॉरी फाई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सुपर सेट का है तो उससे कम तो नहीं होगा, ठीक है। सो मतलब x में क्या क्या हो सकता है फिर? x must have these elements, that is AB,
ABC, ABCD and ABD. ये एलिमेंट्स एक्स में इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस वही है, सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं इस चैप्टर से। क्लियर हुआ चैप्टर? ये और क्वेश्चंस चाहिए? एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रिवीजन क्वेश्चन है, लास्ट डे हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? पहले हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या होगा। x में क्या है? 0 है ना, और n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में फिर हमको चेक करना पड़ेगा कैसे। 8 को हम लिख सकते हैं 1 + 7 होल टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1। ठीक है, फिर इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। तो क्या होगा? NC 0, ठीक है, 7 टू द पावर 0 जो कि 1 ही होता है, तो इसको छोड़ देते हैं, और 1 टू द पावर n, तो उसको भी छोड़ देते हैं। फिर NC1 7 टू द पावर 1 टू द पावर n माइनस 1, उसको छोड़ देते हैं। NC2 7 2 प्लस NC3 7 क्यूब प्लस NC4 7 टू द पावर 4 प्लस सो ऑन डॉट 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 NCN 7 टू द पावर n। यही होगा, माइनस फिर ये बचा है माइनस 7n माइनस 1। सो अब ये अगर करें तो क्या होगा? NC0 क्या होता है? 1, और NC1 1, NC1 भी 1 होता है, इंटू 7 7 प्लस NC2 7 स्क्वायर प्लस NC3 7 क्यूब प्लस सो ऑन डॉट 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 NCN 7 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1। ये यहाँ पर 7n होगा, 7n और ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। और फिर क्या करना होता है? 7 स्क्वायर कॉमन जा रहा है सबसे, तो 7 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ पर बचा NC2 प्लस NC3 7 टू द पावर 1 प्लस NC4 7 टू द पावर 2 प्लस सो ऑन NCN 7 टू द पावर n माइनस 2। मतलब 49 इसका एक कॉमन जा रहा है। ठीक है, 49 इसका एक कॉमन जा रहा है, तो मतलब 49 इसका एक मल्टीपल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और इसका y 49 n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 1 पे y 0, और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में ये y क्या होगा? एक मल्टीपल ऑफ 49। मतलब x जो है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 49, x is a multiple of 49 and y is also a multiple of 49, और x में भी 0 है, y में भी 0 है। सो x क्या लिख सकते हैं फिर हम इससे? ऑब्वियसली x कैन बी अ सबसेट ऑफ y, सो प्रूव्ड x can be a subset of y and it can be a equal subset of y, so therefore it is proved that x is a subset of y. Okay, आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। ठीक है, आज का ये सेशन यही तक ही रहता है। अगले दिन से हम ऑपरेशंस ऑन सेट स्टार्ट करेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर दे देने के लिए। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, then write that in the comment section. I will definitely try to answer that. Okay,
Thank you, and stay tuned with this channel for your educational needs, especially math. Now the math series is going on, so math. Okay. Thank you, and bye bye.